Hello dear students, this is Trilok Singh, lecturer Government Higher Secondary School Mureli, Block Karthala, District Purba, and once again I welcome you all to this video class. So dear students, today I am going to deal with the grammatical section, question tag. And before learning the question tag, we must the importance of this part. What is the importance of question tag? If you know the importance, it becomes easier for us to understand. So what generally in question tag, what happens, the speaker wants the confirmation about his statement from the listeners. The speaker wants the confirmation that the statement is true or not. In Hindi we also do the same thing. जैसे कि हिंदी में हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, वह अंग्रेजी सीख रहा है ना, द लास्ट वर्ड है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग. इन इंग्लिश टू वी डू द सेम थिंग. ही इज लर्निंग इंग्लिश, isn't he? Isn't he? This one is question tag. So before learning question tag, we must know the contracted form of the words. Contracted form यदि हमें पता है, हम easily question tag बना सकते हैं. So I have written the contracted form on the board. So please have a look. And now I am going to read out all the words. Listen to the pronunciation. Is plus not isn't, are plus not aren't, am not amn't, was not wasn't, were not weren't, has not hasn't, have not haven't, do not don't, does not doesn't, did not didn't, shall not shan't, will not won't, can not can't, could not couldn't, should not shouldn't, must not mustn't. So these four words, must, can, shall, will, they have different pronunciation. So what you have to do, you please note down all the words in your copy now, and then we shall learn how to frame question tag in a sentence. Write down. Yes. Now let's learn the question tag through examples. I have written some sentences, and one thing more I would like to explain. When the statement is positive, the question tag is always negative, and when the statement is negative, the question tag is always positive. अब आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं. जैसे कि he is speaking हिंदी, ओके, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा. और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट को यूज करते हैं. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जैसा हमने पहले लिखा है आपको, isn't he, isn't he. Now look at the second sentence. He is not speaking Hindi. This statement is negative statement. So question tag should be positive. तो क्या हो जाएगा? Is he. ध्यान देंगे. Sentence positive, question tag negative. Sentence negative, question tag positive. Similarly, she has done the homework. क्या हो जाएगा यहाँ? Hasn't she. Okay. She has not done the homework. अब क्या होगा? Question tag has she. Clear? Now look at these two sentences. There is no helping verb. यहाँ कोई helping verb नहीं है. तब हमें क्या करना पड़ेगा? We'll have to recognize this sentence, the tense of the sentence. He goes to school. Which tense? Present simple tense. And we know very well the auxiliary verb of present simple tense is do and does. He have
तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज। ही गोज टू स्कूल। अब हमें हेल्पिंग वर्ब मालूम हो गया, अब हम इसका क्वेश्चन टैग आसानी से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका? डजंट ही play? Similarly, this one belongs to simple past tense. They played football yesterday. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? Didn't. Did. Clear? Question tag positive, sorry, sentence positive, question tag negative, sentence negative, question tag positive. अब जैसे कि हम जानते हैं कि जनरली ग्रामर में हर चीज का एक्सेप्शन होता है, तो थोड़ा हम इसमें क्वेश्चन टैग के जो एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है उसको भी हम ध्यान देंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक the exceptional sentence of question tag. Yes, now these are some exceptional examples. So first of all, look at these two sentences. I am late, I am not late. I am late, positive sentence, question tag will be negative, लेकिन इसमें helping verb change हो जाता है। I am late on time, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि एक एक्सेप्शनल सेंटेंस है ना, ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। आई एम नॉट लेट, वंस अगेन, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। आई एम नॉट लेट, एम आई, नोबडी केम टू योर पार्टी। नोबडी और समबडी में प्रोनाउन दे का यूज होता है। नोबडी नेगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। Nobody came. Did they? Similarly, somebody has called me. अब देखिए somebody has called me, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और प्रोनाउन क्या होगा? they. Haven't they? Haven't they? These two sentences, never, seldom, और भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि हार्डली, स्कैर्सली, ये सब सेंटेंस दे लुक पॉजिटिव बट दे प्रोड्यूस नेगेटिव सेंस। देखिए, ही नेवर सेज अ वर्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही नेवर सेज अ वर्ड। अब हम इसको क्वेश्चन पे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। सेंटेंस प्रोजेक्ट सिंपल है, तो डज ही, नेक्स्ट वन, he seldom goes to school. सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। he seldom goes to school, does he? let's play tennis, इसका क्वेश्चन टैग होगा shall we? The last one, wait a minute, question tag is can you? So these are some exceptional examples, ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना है कि कैसे ये बन रहा है ना। एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ एज यूजुअल, this is homework time and I am going to give you some homework. Yes, so dear students, I have written some sentences on the board for your homework and you have to add question tag to the following sentence, to the given sentences. So you just do one thing, you just note them down in your copy and try to add question tag to all the sentences. Thank you very much for watching this video.